want to become irresistible, unforgettable, and charismatic, then, my friends, you have to become confident. And a lot of people ask me, Shaiza, can you go from an introvert to an extrovert person? And my answer is always, no, it's not possible. It's the harsh truth. You cannot go from an introvert to an extrovert, but you can swap your personalities like magic. Let me tell you how. अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, that means you want to become a confident person. You want to have all the eyes on you, and when you walk into the room, people are like, mesmerized by your presence. Ki, all right, she is here, he is here. Do you want to attract the partner that you desire? Because your confidence radiates, and that person cannot do anything but be near you. अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए हैं, and you also want to, be a leader, a public speaker, that people will be like, okay, I want this person as my mentor, I'm so inspired. If these are all the things जो आप अपनी life के अंदर चाहते हो, then keep watching, honey, because we are going to have a lot of fun together. And before we proceed further, I want to share one thing. Before you come to me in the comment section and be like, oh, it's easy because you're pretty, you have magical voice, and people get attracted to you, blah, blah, blah. Don't say that to me, because I had been the most insecure person. I used to be a people pleaser. I have been at there in that, specific position where I was never that much confident. But I worked very hard on myself, and I am not like that anymore. I am not a people pleaser. I am not insecure. Yes, now I am a charismatic person. Now I am confident, and I worked for it. And I'm going to share all of my secrets, that what I did with you, so that you, my friend, can also become a very confident person, inshallah. So let's proceed with it. First of all, you gotta understand one thing, कि एक introvert और extrovert persons जो हैं, ये आपस में बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते. ये नहीं हो सकता कि आप एक इंट्रोवर्ट बन जाओ या फिर आप एक एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, क्योंकि जो एक इंट्रोवर्ट है वो एनर्जी ड्रॉ करता है फ्रॉम द आइसोलेशन, ठीक है. और जो एक्सट्रोवर्ट है वो एनर्जी ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सोशल गैदरिंग्स. व्हाट डज दैट मीन? एनर्जी का क्या मतलब है? देखो, एक जो इंट्रोवर्ट जब अकेला होता है, अलोन टाइम वो स्पेंड कर रहा होता है, तब वो ज्यादा एनर्जेटिक होता है, तब वो ज्यादा क्रिएटिव होता है, तब वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है, हर चीज उसकी लाइफ में बेहतरीन होती है. ऑन दी अदर हैंड, जब एक एक्सट्रोवर्ट हमारे साथ कनेक्टेड हो, तो अकेले वो उतना एंजॉय नहीं कर रहे होते. दे गेट बोर्ड एंड दे गेट वेरी just a low person. But when they are surrounded by the maximum people, they feel amazing, they are creative, they can do anything, possibly can achieve anything, just because they are drawing their energy from the attention they are getting from the people around. तो वो जो social gatherings हैं, उसकी वजह से जो उनको energy मिलती है, वो एक extrovert के लिए होती है. अब ये चीज नहीं हो सकती, एक्सट्रोवर्ट वो एनर्जी ड्रॉ नहीं कर सकता फ्रॉम एन आइसोलेशन. उसका रीजन है क्योंकि हमारा माइंड इसी तरीके से वायर्ड हुआ है, ये हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है. लेकिन आप क्या कर सकते हो? यू कैन शिफ्ट बिटवीन द बोथ. एंड व्हाट डज दैट मीन, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी. डोंट वरी, आई डू दैट माई सेल्फ एज वेल. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन इंट्रोवर्टेड एंड एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन. और अगर आपको रिलेटेबल फील होता है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ आई गॉट यू राइट. जो इंट्रोवर्टेड पर्सन होते हैं, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, दे वांट वन ऑन वन डीप कॉन्वर्सेशंस. वो ज्यादा ग्रुप सेटिंग्स की बजाय किसी एक इंसान के साथ डीप कॉन्वर्सेशन के अंदर बात करना ज्यादा पसंद करते हैं. दे आर वेरी सेल्फ अवेयर, ठीक है. दे नो अबाउट देमसेल्व्स, देयर वीकनेसेस, देयर स्ट्रेंथ्स, उनको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता होता है. दे स्पेंड अलोन टाइम टू रिचार्ज. दे आर वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन्स, ठीक है. उनको दूसरों की ज्यादा मदद नहीं चाहिए होती, बिकॉज समटाइम्स दे रियली हेजिटेट टू आस्क समबडी फॉर द हेल्प. उनके जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है वो स्मॉल होता है. दे माइट नो अ लॉट ऑफ पीपल, बट द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आई बिलीव, मैक्सिमम 2 to 3 लोग होंगे. दे डू हैव अ लॉट ऑफ मेंटल रिहर्सल्स. वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं बिफोर द टॉक टू समबडी, और ये चीज उनको एक ओवर थिंकर की साइड पे भी लेकर जाती है, बिकॉज दे आर मोस्टली थिंकिंग बिफोर दे स्पीक. एंड मोस्टली ये लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, और इनको शायद बुक्स रीड करना, इस तरह की एक्टिविटीज करना पसंद होती हैं. दूसरी तरफ जो एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन होता है, दे आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन. They like being around the people, and they are most energetic when they are around such people. They are outgoing, they thrive in the group activities. उनको टीम वर्क करना, टीम्स में काम करना, ग्रुप्स में काम करना सबसे ज्यादा पसंद होता है, और वो बेस्ट वे में उसमें काम कर पाते हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग द एनर्जी एंड द अटेंशन फ्रॉम द पीपल. सो दे पुट अप देयर बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ देयर, ठीक है. दे डोंट नीड मच अलोन टाइम. वो बड़े फ्लेक्सिबल से किस्म के लोग होते हैं, और चूंकि पर्सनली वो किसी के साथ भी बहुत अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन हैव एफर्टलेस कॉन्वर्सेशंस. बहुत आसानी से किसी से भी बात कर लेते हैं, तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं. इनका जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स
होते हैं वो कोई थोड़े लोग नहीं होते, इनके मैक्सिमम लोग होते हैं, इनको तकरीबन हर कोई ही जानता होता है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट पर्सन इन द यूनिवर्सिटी की जिसके साथ आप चल रहे हो, एंड अदर एवरी अदर पर्सन हु इज पासिंग बाय, दे आर लाइक अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, एंड यू नो दैट, एंड वी ऑल हैव दैट वन फ्रेंड जो कि इस टाइप का होता है. सो यस, दे आर टोटली एक्सट्रोवर्टेड एंड दे लव देमसेल्व्स टू बी इन द स्पॉटलाइट, right? There are many misconceptions about the introverts and the extroverts, but I'm going to address three of them जो कि सबसे ज्यादा commonly exist करते हैं. सबसे पहली चीज के बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो introverted person होते हैं they are very moody, they have attitudes and they don't like to talk at all. ये एक बहुत बड़ा misconception है, it's not true. Introverts बहुत interesting persons होते हैं, मेरे खुद के friends भी हैं जो कि introverts हैं and they are very creative. Yes, they don't talk much, but when they talk they always have a good idea with them. So yes, they are very creative and very interesting people. अगर आप इनके साथ कोई conversation करोगे, you will have a lot of insights from them, and you will be like, okay, do you really know these things? Is that really you? Come on, dude, where have you been? Okay. And secondly, extroverts are always confident. ये भी एक बहुत बड़ा misconception है, ऐसा नहीं होता. They might have insecurities. एंड ये भी कहा जाता है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, दे कैन नॉट गेट अलोंग बिकॉज दे हैव डिफरेंट एनर्जीज, बट दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. वो इसीलिए एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अपनी फ्रेंडशिप निभा पाते हैं बिकॉज दे आर डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाट फिल द गैप. अगर दोनों ही एक्सट्रोवर्ट्स हैं तो वो दोनों थ्राइव कर रहे होंगे टू गेट द एनर्जी फ्रॉम द पीपल अराउंड एंड दे वांट टू बी इन द स्पॉटलाइट, दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ कंपटीशन फॉर देम. ऑन द अदर हैंड, अगर इंट्रोवर्ट्स हैं तो वो तो आपस में बात ही नहीं करेंगे बिकॉज बोथ ऑफ देम आर थिंकिंग इन देयर माइंड के ओके व्हाट शुड आई स्पीक, व्हाट शुड आई से, एंड ऑल ऑफ दैट. सो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट कैन बी एन अमेजिंग फ्रेंड्स बिकॉज वो दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को बैलेंस कर रहे होते हैं, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ सच फ्रेंड्स. ओके, सो या इट हैपेंस. Anyways, now let's talk about how to shift your personality. अब ये चीज क्यों है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी. Well, this is a very unpopular opinion, और शायद ये आपने किसी से ना सुना हो, and this is something that's very personal to me. So even if you disagree with me, it's totally fine. It's totally your choice. But what I believe is आपके अंदर ना दोनों तरह की पर्सनालिटीज के अंदर स्विच करने की एक सलाहियत होनी चाहिए. दैट इज व्हाट आई लर्नड. And I used to be a people pleaser. I used to be an introverted person, but I used to be an extroverted as well. And I have been drawing people towards me. अब क्या चीज़ है कि मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी भी है कि आप किस तरह से किस सिचुएशन के अंदर अपनी कौन सी पर्सनालिटी सामने रख सकते हो. Now what does that mean? अब देखें, इसको आपने थोड़ा सा ना क्रिटिकली अंडरस्टैंड करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एज अ बिजनेस लीडर किसी के सामने जा रही हूँ, मेरे साथ वहां पे क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम है, एनीथिंग, वहां पर मुझे अपने आप को एक्सट्रोवर्टेड हर हाल में शो करना है. क्यों? बिकॉज आई एम अ लीडर, दे नीड टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम मी, दे नीड टू नो दैट आई हैव गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन बिकॉज आई एम एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम व्हाट दे वांट टू बिकम. वो मेरी तरह के बनना चाहते हैं, बिकॉज अगर मैं ही वहां पे उनके सामने एक इंस्पिरेशन नहीं बन रही हूँ, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीपल अराउंड मी. इसी तरह से जो क्लाइंट होता है, दे आर अट्रैक्टेड टू द पीपल. ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ सिर्फ प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली बाइंग यू, द ब्रांड, द पीपल. वो इस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो कि अपनी लाइफ में ग्रोथ ले रहे हैं. इफ आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट इफेक्टिवली इन फ्रंट ऑफ देम, क्या बात रह जाती है. सो द थिंग इज कि इस तरह की सिचुएशंस में, या फिर आप फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर यू टू बी एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, अदरवाइज आप प्रोफेशनली ग्रोथ नहीं ले सकते हो, राइट? दूसरी तरफ अगर आप बात करो कि इंट्रोवर्टेड नेचर एंड ऑल, ये चीज मैं ज्यादातर करती हूँ व्हेन आई एम मीटिंग समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम. आई एम नॉट दैट मच एक्सट्रोवर्टेड बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग, आई एम रीडिंग द अदर पर्सन लाइक अ बुक. All right, I am observing everything. वो कहते हैं ना, रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स आप देख रहे होते हो. आई लिव फॉर इट फॉर इन एनीबडी, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जब आप एक्सट्रोवर्टेड नेचर के साथ किसी से मिलते हो, यू ओवर शेयर अबाउट योर सेल्फ, एंड दैट इज नेवर अ गुड आइडिया. यू मस्ट नॉट डू दैट, एंड यू नीड टू ऑब्जर्व द अदर पर्सन, लाइक वो किस टाइप का इंसान है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, किस तरह की लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वहीं से आपको पता चलता है कि इफ यू कैन गेट अलॉन्ग विद दैट पर्सन और नॉट. मे बी आपकी वैल्यूज उसके साथ अलाइन ना करी हो, लेकिन आपने एक्सट्रोवर्टेड नेचर की वजह से इतनी आसानी से एफर्टलेस कन्वर्सेशन कर ली, एंड नाउ एवरी टाइम दैट पर्सन इज कमिंग टू यू एंड सेइंग हाय, हाउ आर यू डूइंग, एंड यू आर अनॉयड, you don't want to talk.
but you messed up in the first place. Right? So this is something that I prefer, कि आपके अंदर ना एक पर्सनालिटी शिफ्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त आपको किस तरह की यू नो एनर्जी रिक्वायर्ड है, किस वक्त आपको किस तरह का बनना है. दैट इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट. सो ये चीजें मैटर करती हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. As far as I am concerned, I draw my energy when I am in isolation. Okay, as an introverted person, I do that. मुझे me time required होता है. I need to get that time in my head, because if I am not talking to myself, if I am not having me time, I will go insane. But on the same side, I'm an also extroverted person. Sometimes I just want to go out. I want to have a lot of fun because that makes me feel like me. Are you getting that? So the thing is, I am a bit of both. And maybe इसके लिए एक term भी use होती है omni word की, but still, I will not use that. I will just say कि मैं introvert और extrovert के अंदर अपनी personalities को swap कर सकती हूँ, जो मुझे उस वक्त रिक्वायर्ड है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ बिग स्ट्रेंथ ऑफ मी. एंड अगर आप भी अपने अंदर ये चीज ले आते हो, you are going to be successful not only in your professional settings but also in your personal life. All right, now let's talk about it कि आप ये चीजें कैसे कर सकते हो. Now shifting your personality is all about कि you need to put yourself in the position in that way कि आपकी appearance attractive हो सके. अब इस चीज के ऊपर मेरी बात को सुनिएगा. A lot of people are like, appearance matter नहीं करती, आपकी skills सिर्फ matter करती है. No, that's not the case. Your appearance also matters, and you are beautiful in your own way. You just need to know कि आप किस तरह के colors आप पे suit करते हैं, आपके बाल आपको किस तरह की hair style आपको suit करता है, किस type की dressing होनी चाहिए. आप जिस भी मीटिंग के अंदर जा रहे हो, जिस भी फॉर एग्जांपल आप फ्रेंड्स के साथ हो, आप किसी क्लाइंट के साथ हो, आप कहीं पर अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हो, व्हाट्स एवर, उसके मुताबिक आपकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है. यस, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग मैटर करती है, आपकी एनर्जी मैटर करती है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. लेकिन सबसे पहला इंप्रेशन आपकी अपीयरेंस से पड़ता है. सो आई नीड यू टू पुट सम एफर्ट इनटू इट. यू हैव टू फील योरसेल्फ. अब इसके अंदर एक और चीज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी. ट्रिक क्या है? देखें, जब आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो ना, आप अपने जहन के अंदर एक स्पेशल अपीयरेंस उसकी रख सकते हो. ठीक है? इवन दो आपकी वो ड्रेसिंग सेंस और वो आपकी सारी जिस तरह से भी आपने अपनी अपीयरेंस बनाई है, वो आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ऑल ड्रेस्ड अप, you are not going to think कि अब आप कोई introverted person हो who is in his PJs. Okay, आप अपने pajamas के अंदर नहीं हो. You are not introverted, you are out of your bed, and अब आप एक अच्छा लग रहे हो, आपने एक अच्छा ड्रेसअप अपने आप को किया हुआ है, and now you are walking, and now you are an extroverted person. You have shifted yourself. तो ये एक तरीके का यूनिफॉर्म भी हो सकता है. For example, if you are getting up and you are going to the office and you change into your clothes, now you are no longer an introvert, you are an extroverted person. This is what I did with myself, and I still do it. And if you're not in your PJs anymore, you're not in your bed anymore, then you are going to be extroverted and you're going to slay it. All right. So आपको ना अपने आप को फील करना है कि you are a charismatic person, you are a confident person. You need to feel it in your heart, in your personality right away. जब आप अपने आप को इस तरह के mindset के अंदर shift कर दोगे, you are going to, swap between your personalities, and it's going to be super amazing. Secondly, what I want you people to understand is, लेट गो ऑफ द फियर कि दूसरे लोग आपको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, आपको किस तरह से जज कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं. अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग बहुत ज्यादा टाइम इस चीज में स्पेंड कर देते हैं. इज दिस ड्रेस ओके? यार वो तो इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करती, मैं इस तरह की करती हूँ. आई डोंट नो इफ इट विल बी ओके. आज का थीम कैसा है? मुझे बाल खुले रखने चाहिए या फिर मैं हिजाब कर लूँ? व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ मी? प्लीज डोंट डू दैट. कुछ भी ऐसा मत सोचें. यू नीड टू हैव योर ओन स्टाइल. ओके, यू नीड टू हैव योर ओन स्टाइल. एंड आप अगर उसके अंदर अच्छे लग रहे हो, you're looking elegant, you're looking nice, and you are looking like a person you want to be, जैसा आपको अपने साथ अच्छा लग रहा है, एंड आप ऑब्वियसली इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जा रहे हो. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर, एंड उस बेसिस के ऊपर आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है. ठीक है? यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, पीपल आर गोइंग टू लव यू. हैप्पी पीपल नेवर जज यू. जो लोग खुद से खुश होते हैं वो कभी भी ये चीज नहीं करते. लेकिन आपको एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि जो लोग आपके बारे में बात करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है, वो एक्चुअली उनके अंदर अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, और चूंकि वो इंसान वो खुद नहीं बन सकते, तो वो चीजें वो आप पे प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. तो इस तरह के लोगों के ऊपर आपने अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना. ठीक है? डोंट fear being judged. Why would I step away from any abundance to even acknowledge such low vibe behavior? Listen to me again. This is something that I always tell myself. Why would I step away from my abundance to even acknowledge
सच लो वाइब बिहेवियर। दैट मीन्स कि मैं इस तरह के लोगों से कभी उनको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देती जो लोग मेरे बारे में इस तरह की कोई बात करना चाहते हैं। मैं उनके साथ इस तरह की कॉन्वर्सेशन में ही नहीं जाती। आई जस्ट इग्नोर अवॉइड सच पीपल एंड आई डोंट केयर अबाउट सच पीपल। एंड जैसे ही मैंने ये चीज अपने अंदर लेकर आई हूँ, एंड ट्रस्ट मी माई लाइफ इज अ लॉट बेटर, आई फील गुड इन माई सेल्फ। देर आर पीपल, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, देर माइट बी अ पर्सन जिसकी ड्रेसिंग सेंस मुझसे टोटली चेंज है, ठीक है, मेरी ड्रेसिंग सेंस टोटली चेंज है। इट्स ओके, इट मेक्स अस ब्यूटिफुल इन आवर ओन वे, दिस इज व्हाट वी फील लाइक। आर यू गेटिंग दैट? वो ड्रेसिंग सेंस मुझे सूट कर रही है, दूसरे इंसान को दूसरी कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा लग रहा है या मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। आप खुद को कैसे लग रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह से मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत ठहर ठहर के स्लो स्लो बात करती हैं, एंड शी इज अमेजिंग, ओके, शी हैज गुड कम्युनिकेशन, लेकिन उनका स्पीकिंग स्टाइल टोटली डिफरेंट है। ऑन द अदर हैंड, एज आई एम कंसर्न, आई एम अ फास्ट स्पीकर, आई एम अ वेरी एनर्जेटिक स्पीकर, आई ट्रांसफर माई इमोशंस इनटू द अदर पीपल। मैं थोड़ी इस टाइप की हूँ, ठीक है, एंड दैट मेक्स मी अमेजिंग। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज्यादा बेहतर हूँ या वो ज्यादा बेहतर है। नो, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, इट मेक्स मी मी। ऑलराइट। सो आपको ये जजमेंट का जो एक फियर होता है, आपको इसको अपने जहन से निकालना है। देन अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज फेक इट टिल यू मेक इट। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको एक फेक पर्सन बन के दूसरे लोगों के सामने जाना है, यू नीड टू पुट अप अ मास्क। नो, आपको कोई मुनाफकत नहीं करनी, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। इसका मतलब ये है, यू हैव टू बी ब्रेव इनफ कि आप उस चीज के अंदर अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाओ, और तब तक लेके जाते रहो कि जब तक वो आपकी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारा जो माइंड है ना, ये फैंटेसी में और रियलिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। आई हैव टोल्ड यू दिस मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो जब आप एक फैंटेसी बेसिस के ऊपर या किसी अनरियलिस्टिक बेसिस के ऊपर अपने माइंड को कोई भी बात बोलते रहते हो, वैसी चीज होने लग जाती है। इफ यू वांट टू रियली एक्सपेरिमेंट इट, मैं आपको ये कहूंगी कि स्टॉप द वीडियो, क्लोज योर आईज, एंड 5 मिनट्स के लिए आपने सिर्फ एक ही बात करनी है कि आपके सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, आपके सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, एंड आप आंखें बंद करके जस्ट इसी लाइन के ऊपर फोकस करते हुए ये बात बोलते रहो। आई एम 110% श्योर आफ्टर 5 मिनट्स आपके सर में शदीद दर्द वाकई हो रहा होगा, बिकॉज दैट इज वॉट यू आर कम्युनिकेटिंग योर माइंड। और आपका माइंड जो है, वो एनर्जी, वो सिग्नल जो है आपकी बॉडी को दे रहा है, और वो चीज होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड देर आर लाइक मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स बिहाइंड इट। साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है, कह लो कि एफर्ट पुट अप की हुई है, एंड दे हैव डन मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कि हमारा माइंड जो है वो वैसा ही करता है जैसा हम उसके लिए कर रहे हैं। इनफैक्ट पुराने पाक में भी है कि आप जैसा गुमान करते हो आपके साथ वैसा ही होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो फेक इट टिल यू मेक इट। इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, you need to tell yourself, I am confident, I am amazing, people love me, I am the main character. एंड जब आप ये चीज फील कर रहे हो, आपकी वो एक ऑल्टर ईगो टाइप बनी हुई है, यू आर गोइंग टू बी एन अमेजिंग पर्सन। एंड इसके लिए कोई भी चीज इसको ट्रिगर कर सकती है, आपकी ऑल्टर ईगो को। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जिस रूट से आप जाते हो, आपने डिफरेंट रूट लिया, दैट मीन्स कि नाउ यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। आपने एक डिफरेंट ड्रेस पहना, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन। आपने एक डिफरेंट लिपस्टिक शेड अपने लगाया है, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। सो यू कैन ट्रिगर इट विद एनी लिटिल थिंग, और आप इस ऑल्टर ईगो के साथ बहुत इजीली अपने वर्जन के अंदर आगे बढ़ सकते हो। You need to ask yourself, what does your most highest extroverted outgoing version look like? आपका एक्सट्रोवर्टेड वर्जन, आउटगोइंग वर्जन कैसा है, सबसे बेस्ट कैसा है, ठीक है। एंड आपने वो चीज अपने अंदर लेकर आनी है, और ये आप स्पीक नहीं कर रहे बल्कि आप एक बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हो, अनटिल अनलेस कि वो चीज आपके लिए नेचुरल हो जाएगी। आप एक आइडेंटिटी शिफ्ट लेकर आ रहे हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट इट डन। देन अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज मास्टर द डिटैचमेंट। Trust me, my friends, this is a game changer. This is a game changer. You have to be detached from the people, from the things, from the surroundings, from the environment, everything से खुद से detach कर लो. Stop being so anxious. Stop being worrying about everything. Stop it. Trust me over this. आपको detached होना है. Don't think what others might be thinking of you. Own yourself. You walk like you are the main character. You are the most beautiful person. Life experiences, not people pleasers. आप experience कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, आप different settings में हो, okay, that's an experience. It's not about मुझे उसको भी खुश करना है, मुझे उसको भी खुश करना है, मुझे उसकी भी expectations को पूरा करना है, मुझे उसकी भी expectations को पूरा करना है. No, fulfill your own expectations. अपने आप को आप लेकर चलो. Be the queen, be the king. Act like royalty, okay? आप royal हो. You are amazing. You will be treated as such अगर आप खुद को जैसा treat कर रहे हो. Your energy will be perceived.
आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जिनको आप कॉन्फिडेंट समझते हो, ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हो, यू आर नॉट अ कैरिज्मेटिक पर्सन, आप किसी ना किसी से तो इंस्पायर्ड हो गए, कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे आपकी पर्सनल फ्रेंडशिप्स के अंदर हो, कोई भी पर्सन है, थिंक ऑफ दैट पर्सन, डोंट यू फील एनर्जेटिक अराउंड देम, आप उनकी उस एनर्जी को परसीव कर रहे होते हो, आपको ऑलरेडी फील हो रहा होता है कि ओ माय गॉड, that lady is just amazing, मुझे बिल्कुल इनके जैसा बनना है, the way she looks, the way she talks, the way she walk, the way she is, expressing her thoughts, everything मुझे इनके जैसी चाहिए। वो जो एक इंस्पिरेशन है वो आपको क्यों मिल रही होती है, बिकॉज वो एनर्जी रेडिएट हो रही होती है, और वो पर्सन, आप थोड़ा सा फोकस करें, वो पर्सन खुद को भी उसी तरीके से ट्रीट करता है इन द बेस्ट वे, ठीक है। एंड जब आप खुद को बेस्ट वे में ट्रीट कर रहे हो, अगले लोग खुद ब खुद आपको करेंगे, बिकॉज यू आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग कि आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हो, यू लव योर सेल्फ, when you do that people will do it themselves, ठीक है। then another thing that's gonna be amazing for you, you need to learn confident silence। what does that mean? इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और आप क्रीपी वे के अंदर साइलेंट होना स्टार्ट हो जाओ, डोंट डू दैट। दिस जस्ट मीन्स कि आप इसको एक सिंपली एग्जांपल के साथ लो, कि अगर आपने किसी से कोई क्वेश्चन किया है एंड यू थिंक दैट कि अदर पर्सन इज लाइंग टू यू, या आपसे वो कोई बात छुपा रहा है या कुछ भी इस तरह से, यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, और जब उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक किया एंड यू वांटेड टू लिसन मोर, उधर और भी चीजें थी जो भी उसने नहीं डिस्क्लोज की, जस्ट स्टे क्वाइट, बी साइलेंट, मैक्सिमम 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर अगला इंसान दोबारा कोई और स्टेटमेंट उसमें एड करेगा। नाउ थिंक ऑफ इट नॉट ओनली इन द पर्सनल सेटिंग्स बट ऑल्सो इन द प्रोफेशनल सेटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर कनेक्टिंग विद अ क्लाइंट and you want to know about that person pain points or the desires or what they want with the product or the service, ठीक है, आपने क्वेश्चन किया और उन्होंने आपको प्रॉपर आंसर नहीं किया, you're on the call, stay quiet, or you can say ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये एक गैप आ गया एंड द अदर पर्सन विल फील ओके मुझे अभी कुछ और भी कहना है, एंड दे विल बी डाइंग टू फिल द गैप्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ओके, यू नीड टू नो दैट कि ये चीज आपकी कितनी ज्यादा जो है मजे की हो सकती है, एंड इट्स गोना बी अ गेम चेंजर। अगर आप ही हर वक्त बात कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू फिल इन द गैप्स, यू आर ट्राइंग टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग, जस्ट स्टॉप दैट, इट शुड बी बोथ वेज। ओके, सो आपकी जो कॉन्फिडेंस साइलेंस है दैट्स अमेजिंग, इवन दो अगर फॉर एग्जाम्पल what I want to tell you, अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि फॉर एग्जांपल हम लोग सब लोग फिजिकली एक दूसरे से हमारी मुलाकात हुई, हम सब आपस में एक दूसरे के साथ बैठे एंड देयर इज समबडी जो मुझे अनोइंग लगता है, ठीक है, देयर इज समबडी दैट आई डोंट लाइक, आई डोंट वांट टू टॉक, एंड दैट पर्सन मेड अ रूड जोक, और दैट पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद मी एंड वांट्स टू टॉक टू मी एंड ऑल, और मैं नहीं करना चाहती, आई एम गोना लुक एट दैट पर्सन, आई एम गोना मेक एन आई कॉन्टैक्ट in a very calm, serious way, and then I'm going to look back and I'm not going to look at that person again. Okay, I'm not going to say a word, I'm not going to do anything, and trust me, that silence is the biggest slap on the other person. ट्रस्ट मी ओवर इट। जब आप किसी को अटेंशन नहीं देते, जो अटेंशन वो सीख करना चाह रहा होता है, ये इससे बड़ी कहने के उसके लिए बेइज्जती या उसके लिए कोई भी जवाब नहीं हो सकता। आई डोंट इंडल्ज विद द नेगेटिव पीपल, जो लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं या किसी ने मुझे टेक्स्ट ड्रॉप किया है, दे डोंट लाइक मी और समथिंग एंड दे आर जस्ट ब्ला 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 ब्ला, आई डोंट रीड देयर टेक्स्ट, आई डोंट इवन ओपन देयर मैसेजेस, आई डोंट डू सच थिंग्स, बिकॉज मैं खुद एक बिजनेस लेडी हूँ, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे लोग होते हैं, पीपल गेट जेलस ऑफ यू एंड पीपल ट्राई टू डू दैट, एंड इट्स फाइन, आई डोंट केयर, बिकॉज ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते, या इस तरह के जो इनसिक्योर लोग होते हैं, जो अपनी इनसिक्योरिटीज को अगले पर्सन के ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो आपको बुरा महसूस करवाने की कोशिश करते हैं, दे मेक यू फील लुक डाउन, बेसिकली वो अपने ही आपके अकेले के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, दे आर एनिमीज टू देमसेल्व्स, वो अपने साथ ही धोखा कर रहे होते हैं, दे आर स्टूपिड। मैं आपको बड़ा खुल के बोल रही हूँ, एंड आई एम नॉट केयरिंग अबाउट एनी ऑफ सच थिंग्स, बिकॉज इस तरह के लोग अपनी ही मिजरी में होते हैं, दे वो अपनी, उन्होंने समझ लो अपने अंदर एक जहन्नम बनाई हुई होती है, और ऐसे लोगों को खुद से ही बचने की जरूरत होती है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देम। सो बजाय इसके कि उसमें आप भी कूद रहे हो और खुद भी जल रहे हो, उसको साइड पे रखो, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी इनटू सच पीपल। सो ट्रस्ट मी ओवर दिस, कि आपकी साइलेंस आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, यू नीड टू मास्टर दैट, कि आपको किस वक्त किस तरह से करना है, ठीक है। then you need to understand that you don't have to be anxious person। अगर लोग आपको देख रहे हैं, you are in the attention, सब लोगों की नजरें आपके ऊपर हैं, it's okay, you are amazing, people are going to look at you, enjoy that, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, people are looking at you, you need to feel amazing about it because you are so lovely।
हाँ, इट्स टोटली फाइन। तो इस स्पॉटलाइट को एंजॉय करना सीखें, एंड इट्स गोना बी अमेजिंग फॉर यू। देन एज इन पर्सन जो कि कॉन्फिडेंट होना चाहता है, दैट पर्सन नेवर एवर मिस द अपॉर्चुनिटीज। नाउ व्हाट डज दैट मीन? आपने किसी भी अपॉर्चुनिटी को इसलिए नहीं छोड़ना कि ओके अगर मैंने कोई बात की तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप कोई बात गलत बोल दोगे, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट स्पीक अप। कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मत छोड़ो जिसकी बेसिस के ऊपर आपको बाद में रिग्रेट होगा, ठीक है? एंड स्पेशली व्हेन आई यूज्ड टू बी नॉट दैट कॉन्फिडेंट पर्सन एंड आई यूज्ड टू शिवर, मैं कांपने लग जाती थी कि यार पता नहीं मुझे ये जवाब देना है या नहीं देना, शुड आई से? एंड व्हाट आई डिड इज आई जस्ट रेज्ड माय हैंड एंड आई स्पोक। I kept speaking, and it's okay. और मैं खुद को डिफरेंट challenges देती थी। I still remember I was in matric और केमिस्ट्री के हमारे न्यू सर आए थे, और एज ए स्टूडेंट, एंड आई हैव बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ओके। सो एज ए स्टूडेंट मुझे ये था कि मुझे अपना बेस्ट इंप्रेशन उनके ऊपर क्रिएट करना है। या यू माइट थिंक आई एम अ सिली पर्सन, बट इट इज व्हाट इट इज, ओके। आई वांट एवरीबडी to be, you know, mesmerized. So I wanted to be in myself and I wanted to be a confident person. तो उन्होंने हमें फर्स्ट लेक्चर दिया और उन्होंने कहा कि भैया आपने ये वाली डेफिनेशंस याद करके आनी है और मैं कल आके सुनूंगा सब लोगों से, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक ओके फाइन गुड। अब क्या हुआ कि उन्होंने कल वो आए और उन्होंने ना लाइक सब लोगों से एक एक करके डेफिनेशंस वगैरह सुनना स्टार्ट की, डिफरेंट क्वेश्चंस उन्होंने किए एंड ऑल। सब लोगों ने जवाब देना स्टार्ट किया, कुछ लोग नहीं दे पाए थे, कुछ दे रहे थे, सब लोग उर्दू में ही दे रहे थे, ठीक है, बता रहे थे। यू नो व्हाट आई डिड? मैंने इंग्लिश में बात की। मैंने उनको जितने भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए, एंड इट वाज लाइक अ 5 minute conversation within the class, and there was a pin drop silence because everybody was looking at me, what the hell happened to her, why is she trying to be like that? And I was talking to him in totally an English language, or that was very attractive to him, and I have been his favorite student by the way, और chemistry मेरा basic favorite subject है। I really enjoyed it, इसलिए भी मुझे था कि मेरे chemistry के जो भी professor हैं, I need to have a good image, I need to be the favorite student because मुझे ये subject बहुत पसंद है। So what happened, I took a challenge, I grabbed the opportunity, and voila, I was loved by everybody, and I was a matric in matric, okay? अब तो मैं like graduated हूँ, but ये तब की बात है। तो मैं आपको क्या चीज बता रही हूँ कि उस वक्त लेकिन जब मैं बात कर रही थी, it's not like I was so confident, बीच में मेरी आवाज कांप भी रही थी, and I could feel the shivers in my body, okay? I could feel the goosebumps के oh my god, मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि I think so I could hear my heartbeat, but I did that. And amazing, Shiza, you're amazing. I'm giving appreciation to myself. I'm complimenting myself. But the thing that I wanted to share with you all is I don't care about the other people. What I care about is me. How am I putting myself first? So you have to grab the opportunities. अगर आपको कहीं पे मौका मिल रहा है where you can speak up, do that. Okay, do that. And in challenges को आप लोग enjoy करो. ये life के different experiences हैं, and one day you're going to look back and you are going to enjoy and you're going to have a good laugh, and you'll be like, okay, I did that. So it's gonna be amazing. Trust me over it. And you can talk to anybody in a charismatic way. How? Let me share my secret. Start with a compliment and then go deep into the conversation. Like for example, if I am crowd in a crowd, ठीक है, और वहां पे कोई भी लड़की है और मैं उसके साथ थोड़ी सी conversation करना चाह रही हूँ, I'll be like, I like your dress. कहाँ से लिया यार? It's amazing. इसका fabric बहुत अच्छा है. I like the prints as well. Oh, okay. यार मुझे भी इस डिजाइनर के बारे में मालूम है, एंड आई थिंक सो दे हैव अमेजिंग क्लोथ्स एंड उनकी स्पेशलिटी ब्ला 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 ब्ला। कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है? अगर आप किसी के साथ भी अपनी किसी भी स्ट्रेंजर के साथ अपनी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो, गिव अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसा भी नहीं कि उसका ड्रेस बेकार हो और मैं वहां पे कहना शुरू करती हूँ तो इट विल मेक मी लुक अ वेरी फेक पर्सन, तो ये चीज नहीं करनी। कोई भी ऐसी चीज जो कॉम्प्लीमेंट है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज समबडी जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, यू कैन कॉम्प्लीमेंट द पर्सन, हाय अस्सलाम वालेकुम, I just wanted to take a minute and let you know, Aisha, that I love your public speaking skills. The way you speak in a confident way, I am really inspired. Keep shining, girl. That's it. Trust me, next time जब वो वहां से गुजर रही होगी, she will be giving me a smile and she will be saying hi to me. She will want to be my friend because I gave us compliment to her, and उस बेसिस के ऊपर हम लोग किसी भी चीज पे एक डीप कॉन्वर्सेशन की साइड पर जा सकते हैं। अब आपने ये नहीं करना होता, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, जब आपने किसी के साथ भी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की है, यू ट्राई टू डू एन इंटरव्यू, कितने बहन भाई हो, कहाँ रहते हो, क्या करो। आपने ऐसे नहीं करना, यू नीड टू हैव द ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एंड एक ही टॉपिक को पकड़ के आप उसके अंदर बहुत डिटेल में जा सकते हो एंड एक डीप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, बिकॉज डीप कॉन्वर्सेशन ऑलवेज ब्रिंग आउट मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर पर्सनैलिटी। Alright, and another thing that I want you people to know, please put yourself first. Okay,
You need to have the values, you need to have your boundaries, and you are not going to settle for anything less. Please ladies, please gentlemen, don't do it to yourself. ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये लड़कों के ऊपर भी होता है. You need to get into your feminine as well as masculine energy respectively. ठीक है, आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है that life has happened to you, and आपको उस तरह का नहीं रहना जैसे आप 5 साल पहले थे. You have to grow. ठीक है, you need to change, you need to have new likes or dislikes, you need to grow your personality. And जो चीज, जो लोग, जो environments आपको benefit नहीं दे रहे हैं, walk away from it. You spend so much time into toxic relationships, toxic friendships, toxic environments, toxic group settings, कि जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत पीछे भूल चुके होते हो, and you just become a people pleaser. Please don't do that. अपनी कुछ values, अपनी कुछ boundaries रखो, और उसको कोई भी person cross नहीं करेगा. This has been a game changer for me as soon as I had my values with me. मुझे पता था कि मुझे किस टाइप का पार्टनर चाहिए, मुझे पता है कि मुझे किस टाइप का फ्रेंड चाहिए, मुझे पता है कि मुझे किस टाइप की टीम चाहिए, मुझे किस तरह के ग्रुप के लोग चाहिए, मुझे किस तरह के मेंटोर्स चाहिए. And trust me, I am so crystal clear that I am never ever going to compromise on that. And if that person is not like that, I'm going to walk away, I'm going to leave, because somebody else will be there. ट्रस्ट मी ओवर इट. अगर ये चीज आप लोगों ने कर ली, आपकी लाइफ इतने 360 डिग्री के एंगल पे चेंज होगी ना, कि आप लोग कहोगे कि शायजा, वी लव यू, यू आर गोइंग टू लव मी फॉर दिस. बिकॉज जब आपके पास कुछ बाउंड्रीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट लाइक पीपल टू डिसरिस्पेक्ट यू. इफ समबडी इज डिसरिस्पेक्टिंग, जस्ट लीव. You are not going to accept that. Okay, आपने वो चीज नहीं करनी. If you don't like people who are not punctual, और आप इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करते हो, you are never going to add somebody in your team or in your business setting जो कि इस चीज को वैल्यू नहीं करते, because कल को आपके और उसके दरमियान clashes होंगे, because that person is not a committed one. So you need to have your boundaries. And what I do is, before I leave or before I just get it out of it, I always tell the other person, why is this happening, and I give one chance. Okay, let me know if you can cop up with it. It's fine. अगर वो इंसान इस चीज को जो है perfect कर सकते हैं, that's amazing. Otherwise, bye bye. Thank you for having me. I'm done. So yeah, you need to put yourself first. And आपको हमेशा इस चीज को देखना है कि क्या चीज आपको बेनिफिट कर रही है. एंड इसका ये मतलब नहीं है यार कि आप बहुत कुछ सेल्फिश पर्सन बन गए हो या इस तरह की कोई चीज है. इट जस्ट मीन्स कि आप अपने साथ अपने आप को एक प्रोटेक्शन की तरफ लेके जा रहे हो. बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अदर पीपल आर गोइंग टू रूइन यू. दिस वर्ल्ड इज सो क्रूअल. ठीक है, people will ruin you, people will use you for their advantage. And I have been through that. I have friends, I had friends जो इस टाइप के लोग थे कि they were with me because being a brilliant student, I used to help them in their assignments and their projects, and they wanted to help. ठीक है, वो इस चीज के अंदर खुद ग्रोथ लेना चाहते थे, और दे जस्ट वांटेड कि शायद सारे काम कर देगी एंड इट्स फाइन. क्योंकि आई एम अ परफेक्शनिस्ट पर्सन, तो मुझे होता था कि यार कोई असाइनमेंट है या कोई प्रोजेक्ट है, वो 100% परफेक्ट होना चाहिए. और अगर मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता था, मैं खुद करने लग जाती थी कि ओके, लीव इट, लेट मी डू इट, बिकॉज वो एक ग्रुप बेसिस के ऊपर हो रहा होता था. सो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टू प्लीज मी फॉर दैट कि हाय शायद, आई वांटेड टू मेक अ ग्रुप विद यू, यू आर सो ब्रिलियंट, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड उस वक्त तो मुझे वो चीज समझ में नहीं आती थी. बट later on time, when I was sitting one day, and it was like 4 a.m. in the morning, like रात के जो है एक तरीके से 4 बज रहे थे. तो मैंने 6 बजे उठ के जाना था यूनिवर्सिटी. एंड I thought to myself, what the hell am I doing with myself? मैं इस इंसान का काम क्यों कर रही हूँ बैठी, जबकि इसके अंदर खुद ये एनर्जी होनी चाहिए, खुद इसके अंदर ये इतनी ब्रिलियंस होनी चाहिए, उसको खुद इस चीज के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए. नकला इंसान घोड़े बेच के सो रहा है. Why is that? And that day I decided कि no, I don't want to do that. And in fact, what am I going to tell you? मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अकेले बनाया है. आई नो कि वो ग्रुप्स में बनते हैं, बिकॉज वो बहुत उस पर बर्डन होता है, सारा कुछ होता है. एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ. मैं आप लोगों के साथ पर्सनली इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग दैट चेंज्ड me to be a very confident person. And I started to trust myself more. और उस basis के ऊपर I have changed so much, and it's amazing. I put myself first. So ये चीजें matter करती हैं. I don't work with people who are not working in the way they should. I hate people जो over confident हो जाते हैं, जो over commitments करते हैं, and they under deliver. ना 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 ना.
आई डोंट लाइक सच पीपल, बी ऑनेस्ट विद मी। सो ये कुछ इस तरह के ना आप कुछ अपनी बाउंड्रीज, कुछ वैल्यूज बना सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर बाउंड्रीज एंड वैल्यूज के ऊपर एक डिटेल्ड सेशन चाहिए हो, एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो, जस्ट लेट मी नो, आई कैन मेक अ डिटेल्ड वन, कि मेरी क्या वैल्यूज हैं, क्या चीजें हैं, और उससे फिर शायद आप इंस्पायर्ड होकर अपनी कुछ वैल्यूज बना सकते हो, किस तरह से ये बनानी चाहिए एंड ऑल। जस्ट लेट मी नो, आई मेक अ वीडियो ऑन इट, नो वरीज। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, यू नीड टू चूज योर पीपल वेरी केयरफुली, कि आप किस तरह के लोगों में अपने आप को सराउंडेड कर रहे हो। यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ इन द पॉजिटिव एनवायरमेंट। मेक न्यू फ्रेंड्स who don't have stress, anxiety, any kind of issues. Yes, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दो just because they are going through some tough time. No, I'm not saying that. If somebody is going through a tough time, you can be their friend, you can be there to help them out. But अगर वो constantly उस situation में है and they have a complaining mindset, leave. ट्रस्ट मी ओवर दिस, लीव, दे आर पुटिंग यू डाउन। वो खुद भी आगे नहीं बढ़ रहे, वो आपको भी नहीं बढ़ने दे रहे। एंड आई हैव माई सेल्फ आउट ग्रोन ऑफ सच सिचुएशंस। Okay, I had friends, I don't have them anymore because they are not bringing me towards betterment. I need people around me जो मुझे push करें कि शायद get into the better version of yourself. And मुझे इस तरह के लोग चाहिए, मुझे इस तरह के like minded लोग चाहिए, जो ambitious हैं, जो growth के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जो positivity में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। They want to become independent in their life, not only just like financially, but also the time freedom, the spiritual freedom, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मतलब मुझे इस तरह के लोग पसंद है जो मुझे ग्रो और ग्लो करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। आई नीड सच पीपल अराउंड मी, ताकि मैं अपने उस बबल से बाहर निकल सकूं। आई एम नॉट जस्ट सिटिंग अराउंड एंड डूइंग ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है। सो instead of my desire to stay at home, they need to push me out, ki no, you have to get this aim done, you need to get this project done, you need to get this deal done, whatever it is. तो मुझे इस तरह के लोग चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पुराने दोस्तों को डिच कर दो, बट यू नीड टू लर्न कि किस वक्त आपको किसको जाने देना है, हु यू हैव टू लेट गो। देखो, हमारी जो लाइफ है ना, अल्लाह ताला ने हम सबके लिए डिफरेंट कोर्सेज उसमें डिजाइन किए हुए, डिफरेंट फेजेस डिजाइन किए हुए। एक आपका टीनेजर फेज था, फिर आपका अर्ली ट्वेंटीज का फेज आता है, फिर आपका लेट ट्वेंटीज का फेज आता है। इसके अंदर डिफरेंट फेजेस आपके इन्वॉल्व होते हैं। देन यू गेट मैरिड एंड यू हैव चिल्ड्रन, यू हैव फैमिली, दैट्स अ डिफरेंट फेज, ठीक है। सो मतलब हर फेज के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के एनवायरमेंट्स होते हैं और डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। एज हाउस वाइफ यू कैन नॉट हैव a great friendship with a teenager because you guys have a totally different mindset. Are you getting my point? So it's not about ditching the friends, it's just about letting go of somebody or some situations or some environments which are not serving you at the phase you are. ठीक है, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। एंड आप उनके साथ फिर भी हेलो हाय रख सकते हो, you're just not talking to them very constantly, and it's totally fine. You need to know कि आपको किस वक्त किस तरह से आगे बढ़ना है। For example, if I am in a business setting, my best friend is not going to help me in that, ठीक है। बट पर्सनली आई हैव अ गुड कनेक्शन विद हर, आई डू मीट अप, आई डू टॉक टू हर, बट नॉट वेरी ऑफ्टन, okay, and it's totally fine. She also understands that I'm a busy person, I also understand that she is a busy person. उसकी अपनी एक फील्ड है, मेरी अपनी फील्ड है। She is much more into the job sector, I am much more into the business sector, and we have a different mindset regarding that. So we don't talk about much into the aims and all. हम इन चीजों के पे बहुत ज्यादा डिस्कशंस नहीं करते, या हमारी एक एक घंटे की कॉल्स नहीं होती। I don't do that, ठीक है। वी डोंट डू दैट, बट वी डू स्पेंड सम टाइम व्हेनेवर वी हैव द फ्री टाइम, कि हाँ चलो यार मीटअप कर लेते हैं, हाँ यार चलो आज कॉल कर लेते हैं, एक महीना हो गया एंड स्टफ। या वी डू दैट, बट द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो इज, इन द प्रोफेशनल सेटिंग्स आई हैव मोर फ्रेंड्स जो जिनके एम्स मुझसे मैच करते हैं, एंड मैं उनसे हर दूसरे दिन से दिन मेरी किसी ना किसी चीज़ पे बात हो रही होती है, कि फॉर एग्जांपल आई एम लॉन्चिंग दिस, मैं ये कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, या मैं ये ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ, या फिर मैंने ये डील डन की है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लाइंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एम, how we are going to get this done, what do you think about this strategy, blah blah blah. So the point that I'm telling you is, आपको अपनी environments, आपको अपने phases के मुताबिक अपनी surroundings को choose करना है, ठीक है। This is going to help you a lot, and you need to stop becoming a desperate person. You need to learn how to let go of people and things, and it's totally fine. ये चीज बहुत ज्यादा important है। जब आप इस चीज को अपने अंदर आने दोगे, you are going to learn that it's totally okay. You need to stop being desperate for the friendships, for the relationships, for the environments. If someone is not being a true friend to you, let them go. If a guy doesn't love you anymore, let go. It's totally okay. It's gonna hurt for a while, but I promise you're going to be okay. Because agar ek insan is not there anymore as a committed and as a loyal person, you are going to be hurt in the near future even more. So agar ek insan ja rahe hai, jaane do, tabhi to you are making a space for somebody else. You are blocking your own blessings by sticking to those things जो आपको मजीद अब सर्व नहीं कर रही हैं. Listen me again.
जो फ्रेंडशिप्स या जो रिलेशनशिप्स या जो भी चीजें, एनवायरनमेंट जो भी है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा, जो चीज आपको भी बेनिफिट नहीं कर रही बिल्कुल भी, अगर आप उसके साथ चिपक के ही खड़े हुए हो, तो आपकी आने वाली ब्लेसिंग्स इंतजार में है, व्हेन यू आर गोइंग टू लेट इट गो। Are you getting that? You are blocking your own blessings. So stop that, okay? You need to stop that. You need to choose that who you want in life, and जो person आपको value कर रहा है, आप भी फिर उसी को value करो. It's not gonna end, all right? Life goes on. ठीक है, तो आपने इस चीज को समझना है कि एक दिन तो वैसी हर चीज खत्म हो जानी है. सो यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम सच एंडिंग्स एंड सच थिंग्स. जिस इंसान ने आपकी लाइफ में जितनी देर तक रहना है, इट्स ऑल डिसाइडेड बाय अल्लाह अलमाइटी, एंड यू नीड टू लेट नो अबाउट इट एंड लेट गो व्हेन द टाइम इज देयर. You have to understand that. All right. And as a confident person, what you need to do is you need to let your energy radiate, let your aura radiate. इसका क्या मतलब है कि जब एक कॉन्फिडेंट पर्सन आपके सामने आता है, आपने देखा होगा कि उनकी एक अलग ही किस्म की एनर्जी होती है, जो सबसे वो बात कर रहे हैं, बैठे हैं, उनकी अपीयरेंस है, हर चीज, उनकी एक एनर्जी मौजूद होती है. सो आपका भी एक एनर्जी है जो आपने रेडिएट होने देनी है. और ये किस तरह से होती है? ये आप जब अपनी वर्थ को जानते हो, यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस. You have the values, you have the boundaries, and you are not going to do that. ठीक है, तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है. लेकिन यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी काइंड. इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई बहुत सेल्फिश पर्सन बन रहे हो, या आप इस तरह की चीजें अपने अंदर लेकर आ रहे हो, यू बिकमिंग एन एरोगेंट और अ रूड पर्सन. नो, यू कैन बी काइंड एंड ग्रेसफुली कॉन्फिडेंट. तभी मैंने charismatic का वर्ड हर जगह पे यूज किया है, दैट यू हैव द charisma in you. You are still very likable, but you are just not serving the people. Are you getting that? Be humble but aware of your worth. Let your aura radiate. You don't need to shout, but your silence energy will radiate your energy. Talk to someone with an eye contact. Okay, talk to somebody with a a positive attitude. It's totally okay. तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, बिकॉज मैं आपको एक सीक्रेट अगर बताऊं, एक इस तरह का अनपॉपुलर ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूं, जो चीज आपको सबसे ज्यादा तंग करती है और आपको कॉन्फिडेंट नहीं होने देती. यू नीड टू हैव एवरीथिंग परफेक्ट इन योर हैंड्स. परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट फ्रेंडशिप्स, परफेक्ट बिजनेस, परफेक्ट करियर, एवरीथिंग यू वांटेड टू बी परफेक्ट. बट लेट मी टेल यू, एवरीबडी इज फिगरिंग आउट कि वो इस वक्त कहाँ है और उनको कहाँ जाना है. इवन वो लोग जो मिलियनर्स बन चुके हैं, दे ऑल्सो हैव डिजायर्स. इवन वो लोग जो अब 80 ईयर्स के हो चुके हैं, दे आर अबाउट टू डाई, दे ऑल्सो हैव डिजायर्स एंड दे आर थिंकिंग अबाउट, दे आर फिगरिंग इट आउट. बिकॉज हम सबके लिए, चाहे जो भी एज है, जिस भी पोजिशन में हम हैं, जिस भी स्टेज पर हम हैं, हम सब अपनी पहली जिंदगी ही गुजारे. दिस इज लाइक वन लाइफ वी हैव, राइट? इवन इफ इट्स योर पेरेंट्स, अगर वो फेसबुक को देख रहे हैं या फिर वो यूट्यूब को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट. दे डोंट नो अबाउट इट, दे आर ऑल्सो इट्स फर्स्ट टाइम, राइट? एवरीबडी इज ट्राइंग टू फिगर आउट. तो किसी को भी ना एक्चुअली में आपकी बहुत ज्यादा कोई केयर नहीं है कि ओके व्हाट इज हैपनिंग विद यू. आप अपने आप को ही देख रहे हो. इफ यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, यू माइट बी अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड फॉर अ वाइल. आप एक दिन मैक्सिमम उससे इन्फ्लुएंस रह सकते हो, बट द नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इनटू योर ओन थिंग्स, बिकॉज यू आर फिगरिंग आउट योर लाइफ. You have your things going on. So what I suggest is कि इतना ज्यादा खुलकर हर किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स, अपनी अचीवमेंट्स, हर चीज शेयर करने की जरूरत नहीं है. जस्ट हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो लॉयल हैं. ठीक है, एक से दो लोग ही होते हैं, आपकी फैमिली होती है, इफ यू हैव अ गुड कनेक्शन विद देम. कुछ लोगों की फैमिली भी टॉक्सिक होती है, सो इट वेरीज. तो डिपेंड करते है कि अगर आपके पास कोई लॉयल पर्सन है या नहीं, और अगर नहीं है, इट्स टोटली फाइन. जस्ट टॉक टू अल्लाह. ट्रस्ट मी ओवर इट. In this world, in actual, it's impossible for everyone to care about you all the time. Even आप किसी की care हर वक्त नहीं कर सकते. And it's a harsh truth. You might be like, my mother cares for me all the time, my father cares for me all the time. No doubt they do care, but they also have their own life going on. They also care about their spouse, they also care about their parents, they also care about the other children. उनके पास भी बहुत कुछ है. आप अपने ही पेरेंट्स की भी 110% पूरे टाइम केयर नहीं कर सकते. यू आर केयरिंग अबाउट योर सेल्फ एज वेल, योर लाइफ टू बी अपकमिंग, योर चिल्ड्रन, योर स्पाउस. यू आर ऑल्सो डिवाइडेड, राइट? सो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान आपके ऊपर 100% अपनी अटेंशन रख सकता है. यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट फैंटेसी. आप अपने आप के साथ ये झूठ बोलना, अपने आप को इस तरीके चीज में रखना बंद करो. क्योंकि जब आप ये चीज छोड़ोगे, तभी तो आप अपने आप को देख पाओगे, एंड यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड वंस यू डू दैट, एंड यू विल बिकम पावरफुल इन योर सेल्फ. जब आप अकेले बैठे हो, आप उसको भी इंजॉय करोगे. यू विल नॉट बी लोनली इवन इफ यू आर अलोन. लोनली होने में और अलोन होने में डिफरेंस है. इफ यू आर लोनली, दैट मीन्स यू आर सैड व्हेन यू आर नॉट अराउंड पीपल. इफ यू आर अलोन, you are even happy at that time because you are spending some time with you. Are you getting my point? This is something that's important.
एंड इसी तरीके से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन नेवर टेक अ रूड जोक फ्रॉम समबडी. दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये चीज इसलिए मैटर करती है क्योंकि यहीं से आप अपने ऑरा को सेटल करते हो, यहीं से आप अपनी एनर्जी को सेटल करते हो. People will respect you how much you respect yourself. If somebody is making a rude joke, just stop and ask, why did you say that? I didn't find it entertaining. Don't talk to me like that again. Be very clear about it. Even if it's your spouse, even if it's your friend, even if it's your mentor, anybody, अगर वो आपके साथ एक rude joke कर रहे हैं, वो उस वक्त तो मजाक लेंगे कि like ha ha ha, that's amazing, but after some time they are actually going to mean it. पहले उन्होंने अगर आपको stupid कहा, फिर वो आपको dumb कहेंगे, फिर वो आपको कहेंगे कि this person is just so dumb that they don't understand even a single thing. एंड वो आपको ग्रुप सेटिंग्स के अंदर कहना स्टार्ट कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड यू आर गोइंग टू फील द इनसिक्योरिटी अबाउट योरसेल्फ बिकॉज आपके माइंड को वही बात बार बार सिग्नल हो रही है. सो डोंट डू दैट. ओके, सिक्योर योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, डोंट टेक अ रूड जोक. मेरे साथ जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जितने भी लोग मुझे जानते हैं, दे कैन नॉट डू दैट. मेरे पीठ पीछे अगर वो बात करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आई डोंट care about that, but मेरे मुंह पे मेरे साथ कोई भी इस तरह की बात नहीं कर सकता because they're going to get an answer and next time I'm not going to sit on the same table as they are sitting. I'm going to protect myself. I'm going to protect my peace. I respect myself and that's the reason people around me respect. If I don't want to go somewhere, I openly communicate, यार मैं नहीं आ सकती. It's not like अच्छा मैं देखूंगी या नॉल में ये भी situations में नहीं जाती. I straightforwardly tell the other person, okay I will come, okay I will not come. Why you're not coming? I don't feel like coming. I'm not having a good time today and I just want to spend some time with myself. I want to watch Netflix or I want to stay in my bed or I want to make a presentation. I have a group meeting, whatever. And I don't owe an explanation to a lot of people कि नहीं क्यों नहीं हो रहा, मैं try करती हूँ, blah blah blah. No, I don't do that. मेरी कमिटमेंट किसी चीज़ के साथ और मौजूद है, मैं उसके साथ अपनी कमिटमेंट रखूंगी. And that is much how I respect that. Next time if my friends or somebody wants to meet up, they will let me know, not at the 11th hour कि for example 2 घंटे बाद जाना है तो मुझे तब बता रहे. I never do that. Even this is my boundary or my value as well. Even if there is my partner and that person is telling me कि like Shaiza, let's meet in 2 hours. No, never. It's totally impossible. I am not meeting you in like 2 hours like this. इस तरीके से नहीं, बिकॉज इफ अदर पर्सन नोज दैट कि अगर मैं खुद एक एम्बिशियस पर्सन हूँ, आई माइट हैव थिंग्स गोइंग ऑन. राइट, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स के ऊपर, जो मुझे पता है बहुत लोगों को इस तरह की सिचुएशंस पसंद होती हैं जो लास्ट मोमेंट्स के ऊपर आपके एकदम प्लान्स बनते हैं, आप उनको एंजॉय करते हो. आई डू एंजॉय देम एज वेल. अगर वो चीज़ मुझे सर्व कर रही है उस वक्त मैं वो चीज़ कर सकती हूँ. इट्स टोटली फाइन, आई गो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट, बिकॉज मैं खुद बिजनेस करती हूँ, खुद मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल कनेक्टेड टू मी, आई हैव कमिटमेंट्स, आई हैव गोल्स, आई हैव एम्स. और अगर अगले इंसान को ये बात मालूम है, if that person is my partner, my friend, my family mate, whatever, that person is going to respect that for me. And it will not be a problem. That will not create any kind of misunderstanding or the something like, oh तुमने मुझे मना कर दिया, कैसे कर दिया, blah blah blah. That person will understand. ठीक है. एंड सिमिलरली आई एम गोइंग टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सनस टाइम एज वेल. तो मतलब मेरा आपको सिर्फ बताने का ये है कि जो आपकी वैल्यूज, जो आपकी बाउंड्रीज हैं, वो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बना रही होती हैं. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. इनफैक्ट आपकी जो बिजनेस सेक्टर है उसके अंदर भी, इफ यू आर नॉट वर्किंग आफ्टर 10 PM, दैट्स फाइन. मेरे साथ कोई क्लाइंट कनेक्टेड है, इवन इफ दे वांट टू डू अ ट्रांजेक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू बी desperate about it. I'm going to be like, my work has concluded, I don't work after 10 PM. Inshallah, I'll connect with you tomorrow at 9 a.m. Is that okay with you? You need to have that. You need to have that. जब आप अपनी बाउंड्रीज, अपनी वैल्यूज रखोगे, आप उसी तरह के वैल्यूज और बाउंड्रीज वाले लोगों को ही अपनी लाइफ के अंदर एक तरीके से इनवाइट कर रहे हो. और इस तरह के लोग ग्रो कर रहे होते हैं और इसी तरह के लोगों के साथ आप ग्रो कर सकते हो. इफ देयर आर पीपल जो हर वक्त क्लासेस बंक करते हैं, इस तरह के 11th hour प्लान्स बनाते हैं, आई कैन नेवर गो विद दैट. Yeah, sometimes it's cool for me, I can do that, but not every time. That's just not me. We are not going to get along. Are you getting that? So you need to respect yourself. How much you respect yourself, people are going to do that. So इन चीज़ों के ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है, बिकॉज लास्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस चीज़ को नहीं लेकर रखते. लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो, आप खुद को वैल्यूएबल करते हो, you are going to change the game. And you need to love yourself the most. You need to spend the me time. In fact, whenever I am looking into the mirror and I'm getting ready or something, I always compliment myself. You might think I'm a crazy person for this, but start doing it
एंड जस्ट मैक्सिमम 1 वीक के लिए करो एंड देखना आपका एक एटीट्यूड, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका दिन, हर चीज is going to be enhanced. It's going to be amazing. Because जो चीज आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बता रहे हो, that is what's going to happen. For example, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो हर वक्त ये कहती रहे कि I'm not pretty, I'm not pretty, I'm not pretty. Even if she is pretty, even if she is beautiful, after some time हमें ये लगेगा कि यार ये बाकी बहुत बदसूरत है, बिकॉज वो चीज इतनी दफा हमारे माइंड पर इम्प्रिंट हो चुकी है कि हमारा उस तरह का एक आइडिया बन गया उस इंसान के बारे में, एंड यू आर गोइंग टू बी अनॉयड फ्रॉम दैट पर्सन. इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो हर वक्त रोता ही रहता है, हर वक्त उसकी कंप्लेन्स है, यू डोंट लाइक सच पीपल, राइट? यू डोंट लाइक सच पीपल. सो अगर जो इंसान हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं, यू आर गोइंग टू थिंक दैट दिस पर्सन इज सच अ कंप्लेनर एंड आई डोंट वांट टू बी अराउंड देम. That happens, right? So you need to understand कि आपको खुद को वैसा नहीं बनाना. You need to love yourself. You need to do that. और इसके लिए आप खुद को कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हो, आप खुद को एफर्मेशंस कर सकते हो, आप मेडिटेशंस कर सकते हो. जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ. आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी किस टाइप की पर्सनैलिटी है. जितना आप खुद को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, उतना ज्यादा आप खुद को बेटर वे में ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकते हो, उतने बेटर वे में आप अपनी वैल्यूज रख सकते हो, उतने बेटर वे में आपकी बाउंड्रीज हो सकती हैं, उतने अच्छे से आप खुद को रिस्पेक्ट कर सकते हो, उतने अच्छे से आप अपने एम्स को अचीव कर सकते हो. इट ऑल स्टार्ट्स विद इन यू. So when you have that, my friends, you are going to be unforgettable. You are going to be charismatic. You are going to be the confident queen. You are going to be that royalty. And people are going to love you because you are loving yourself. So you need to own the room wherever you're walking. This is all for you energy. For example, if I am, giving a speech, I'm doing a presentation. जब मैं उस रूम में खड़ी हूँ, I am thinking about कि ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आए हैं. This is all for me. I'm amazing. जब ये चीज होती है, my nerves are totally calm down. मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही होती, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही होती, कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे होते. I am so calm. And even if that doesn't work for you in the beginning, it's okay. Take a chocolate or anything sweet. आप वो खाओ, वो आपके nerves को एकदम calm करती है. And right away, you're going to think of it. ये सब लोग मेरे लिए आए हैं and I am the main character. I am the one here. ये सब चीजें मेरे लिए हो रही हैं. And जैसे आप ये चीज feel करोगे, you are going to signal your mind that everything is going good. You are going to, my friends, enjoy the whole event or the personal settings or anywhere you are. This works everywhere. ठीक है, हर चीज में ये वर्कआउट करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द माइंडसेट. यू नीड टू नो कि आपको किस तरह से अडाप्ट करना है, किस तरह से शिफ्ट लेकर आना है. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड. लोड्स ऑफ लव. बाय.